Yes, children, good morning. Good morning, ma'am. Beta, we are left with the good morning, children. We are left with the topic enzymes in biomolecules. Let's do this. Many days we have not had a class. Offline, then holidays. Let's study as to what are enzymes. See, beta, enzymes are the biological catalyst which influence the speed of a biochemical reaction. In chemistry, we use this word catalyst. Anything which influences the speed of a reaction is what we call as a catalyst. You remember? In chemistry, this is the word that we use. And if these catalysts are biological, okay, we are talking about these catalysts affecting reactions inside living organisms. So we call them as biological catalysts. Then we call them as enzymes. So chemistry, we have all physical reactions taking place outside, chemical reactions, not inside the living body. So there we call it as catalyst. But in biology, because this is biological, influencing the speed of reactions, which kind of reactions? Not chemical reactions. These are biochemical reactions. Chemicals which take place in biomedium, that means in a living medium. We call them as enzymes. So catalysts and enzymes are the same. The only difference is catalyst influences the speed of a reaction outside a living organism, that means in a non-living medium, and here they influence biochemical reactions. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. This is very important to remember. You can take category of thousands of enzymes are there. Remember, beta, all the enzymes, they are proteins. But if I say all proteins are enzymes, then this is not true. All proteins cannot influence the speed of a reaction. However, some of them can do. Those proteins which can influence the speed of a reaction, we call them as enzymes. So it is very clear that all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Another thing about enzymes, they are very specific. Each enzyme has its own substrate. Now, what is substrate? Enzyme acts upon a substance. That substance is what we call as substrate. They are very specific. ऐसा नहीं है कि किसी भी substrate पे act करेंगे. We have a very common theory regarding this. This is called lock and key mechanism for the action of enzymes. जैसे कि you know, in a lock, every key will not fit. जो लॉक है उसकी अपनी की ही अंदर जाएगा. So lock को हम लोग substrate मान ले रहे हैं, and enzyme is considered as your key. So like a key is active only on a specific lock. Similarly, beta, enzymes also, they will act only on a specific substrate. तो lock हमारा क्या हो गया? Substrate or key? Sorry, tell me, lock is what? Substrate or enzyme? Substrate. Substrate. Very good. So इतने सारे लॉक्स हैं, बट एक स्पेसिफिक की इसमें फिट होगी, दैट इज इट. एंड द रीजन इज बिकॉज ऑफ द शेप. द रीजन इज बिकॉज ऑफ द शेप. इफ यू सी, ये देखो एग्जैक्टली ये एक स्पेसिफिक शेप दे दी जाती है की में, एंड ये जो जगह बनी है यहाँ पे, वही शेप में इंटरलॉकिंग टाइप का कुछ मैकेनिज्म हम कर देते हैं. यू मस्ट हैव डन क्रेस्ट, ट्रॉफ्स, इंटरलॉकिंग, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कुछ कुछ अगर याद आए तो इट इज समथिंग लाइक फ्रिक्शन वाला. इंटरलॉकिंग हो जाता है between this surface and this surface. So lock and key mechanism for action of enzyme, that means each enzyme has its own substrate. One key cannot enter into all the locks. Similarly, every enzyme cannot be effective on all the substances. Next, beta, ribozymes. You know about ribosomes. So this is another word, ribozymes. RNA that behave like enzymes are called as ribozymes. If you break this word, we know RNA full form is what? What is the full form of, what is R in RNA? Tell me, in RNA, what does R stand for? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid. So very good. So we've got this word ribo from here. And because this is acting, this RNA is acting like an enzyme, so this word zyme we have taken from the word enzyme. दोनों को ऐड कर दिया, बन गया ribozyme. Means RNAs which behave like enzymes, they are known as ribozymes. Enzymes form a tertiary 3D structure with some pockets which are called active sites into which the substrate fits. अभी यही हम लोग बात कर रहे थे, देखिए. See, these are
पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो ग्रूव्स हैं, इन साइट्स को हम एक्टिव साइट्स बोलते हैं। एक्टिव साइट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सबस्ट्रेट जो है यहीं पे फिट होता है, ये बीच में ग्रूव्स जो छोड़ रखे हैं हमने बीच में खाली हैं, दीज साइट्स जहां पे जाके इंटरलॉकिंग हो जाता है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट का, दो साइट्स आर नोन एज एक्टिव साइट्स। सपोजिंग ये एंजाइम है, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस आप देख रहे हो जहाँ कर्सर चल रहा है, ये वाला ये प्लेन है बेटा, इसमें कोई ग्रूव्स नहीं है, ये पूरा का पूरा सरफेस देखिए, ऊपर वाला और ये वाला कोई ग्रूव्स नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कोई एक्टिव साइट नहीं है। एक्टिव साइट क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आके इंटरलॉक नहीं हो सकता, फिट नहीं हो सकता है। ओके, नाउ ये वाला जो एरिया अगर आप देखो तो ये देखिए, ये ग्रूव्स है, यहाँ पे खाली जगह है, दीज ग्रूव्स आर व्हाट वी कॉल एज एक्टिव साइट्स। यही ग्रूव्स में जाके फिर सबस्ट्रेट का जो ग्रूव्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं। So first, enzymes are biological catalysts because they act inside living organisms. All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Each enzyme has its own substrate. सब पे act नहीं कर सकते हैं, like की सब पे नहीं करती है। RNA that behaves like enzymes are called ribozymes. And enzymes का 3D structure है। ये जो pocket like crevices जो है, ये pocket like structures जो बने हुए हैं ये, these are known as active sites. Now, chemical change and physical change बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। Chemical compounds they undergo two types of changes, beta. A change in the shape of state of matter without breaking bonds, like ice is melting into water or water is becoming water vapor. ये कौन सा change है? Physical या chemical? Ice into water, water into water vapor. Which kind of a change is this? Physical. Yes. Physical. Because when we did the definition of chemical reactions in class 6, 7th and 8th, we said some new substance with new properties is formed. यही चीज हम लोग कीवर्ड हमेशा यूज करते आए हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। फिजिकल रिएक्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। रीजन क्या होता है? नाउ दिस टाइम टू अंडरस्टैंड। फिजिकल चेंज में बेटा बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करते, इसीलिए कोई नई चीज बनती नहीं है। बट इन केमिकल रिएक्शंस बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ केमिकल चेंज। Chemical change में bonds are broken and new bonds are formed. It may be organic or inorganic reaction. Organic मतलब ये देखिए, सारी नॉन लिविंग चीजों में रिएक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे। इनऑर्गेनिक चीजों में बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड is giving me barium sulfate plus water. What kind of a reaction is this? Combination displacement, single displacement, double displacement, redox, क्या है ये? Displacement reaction. Yes, it's a single displacement. Agreed, everybody? Or a double displacement? बताओ. Ma'am, single displacement. Single Everybody agree? This is single displacement and this is an organic reaction because starch plus water is giving you glucose. Organic chemistry where we deal with carbon. So glucose बनेगा C6H12O6. So ये हमारा organic reaction हो गया. ये देखिए आपके काम का चीज है ये. Rate of a physical or a chemical process is equal to amount of product formed upon unit time. How much product is formed? यहाँ पे product glucose है बेटा, ये reactants है हमारे. तो कितना प्रोडक्ट बना, कितना मास ऑफ प्रोडक्ट बना अपॉन द टाइम टेकन. Zyp by Zyt, this is what? This is the rate of a process. अगर फिजिकल है तो भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, केमिकल प्रोसेस है तो भी यही लगेगा. बहुत सिंपल है. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. सपोजिंग इन 1 मिनट कितना ग्लूकोज मैंने आपको बता दिया, इतना है. आई टोल्ड यू, चलिए 5 आवर्स में 5 kg ग्लूकोज बन गया, तो स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलेंगे हम लोग 1 आवर, तो कितना बनेगा? 5/1. So amount of product formed upon unit time. This tells you the rate of a physical process or a chemical process. ये देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आएगी अब आपके लिए. Rate is called velocity if the direction is specified. देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा कि दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं. इफ यू रिमेम्बर कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद होगा कि दोनों बिल्कुल उल्टे होते हैं, तो हम लोग डबल एब उसमें याद है, ऐसे करके लगाते फिर ऐसे लगा देते. मतलब स्टार्च प्लस वाटर ग्लूकोज बनेगा एंड ग्लूकोज ब्रेक करके उल्टा क्या बन जाएगा? स्टार्च प्लस वाटर. ठीक है. अब बेटा इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब जिस स्पीड से स्टार्च एंड वाटर कंबाइन करके ग्लूकोज बनेंगे, ये एक रेट ऑफ रिएक्शन हो गया.
इफ आई टॉक अबाउट कि ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन का डायरेक्शन उल्टा जाएगा, राइट? ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन। अगर आपको याद होगा तो हम लोग बहुत सारे ऐसे रिएक्शन लिखते हैं केमिस्ट्री में जिसमें डबल एरोज होती हैं, ऊपर वाला लगा होता है खाली और फिर हम उल्टा करके नीचे वाला लगाते हैं। यू रिमेम्बर इन केमिस्ट्री यू मस्ट हैव डन सर्टेन रिएक्शंस। व्हाट डज दैट मीन? वो जो डबल एरो डिफरेंट हेड डायरेक्शंस लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है उन रिएक्शंस का? लेट मी The सी reaction is reversible. yes, the reaction is reversible. Please see these arrows over here. ये देखिए, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। नाउ अभी तो हमने बोला दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। Now you know the difference between speed and velocity. In class 10th you must have done. You know the difference between distance and displacement. अच्छा, distance and displacement में difference बताइए. Distance What is is the the actual difference? path and displacement is the shortest path. Okay, very good. One more difference, come on. Vector and scalar के terms में. What is the difference between distance and displacement? Or speed and velocity? कुछ भी बता दो. Displacement is vector, whereas distance is scalar. Okay, very good. So we have a direction, right? We have a direction there and here we do not have a direction. Same चीज है बेटा. जो डिफरेंस आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में है, स्पीड एंड वेलोसिटी में है, वो यही है कि एक में डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता। सो इफ आई से रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। बट अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाए तो हम रेट को ही क्या वर्ड यूज कर देते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, सी व्हाट, यस बेटा, इफ द चेंज इज, डायरेक्शन इज वेरी क्लियर कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, देन इन प्लेस ऑफ रेट आप कौन सा वर्ड यूज करिए, वेलोसिटी यूज करिए। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर। अब कितनी स्पीड से एक रिएक्शन होगा, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो रेट का मतलब क्या है, कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेट। एंड अगर हमें ये भी पता है कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। सो वेलोसिटी है या रेट है, इस पे बहुत सारी चीजों का फैक्टर्स, लाइक आपको कुछ वर्क दिया जाता है स्कूल में करने के लिए, सो द स्पीड विद विच यू फिनिश योर वर्क, ओके, इज रेट। व्हाट इज इट? इट इज रेट। ओके, अब देखिए, नाउ देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, सपोजिंग आई टेल यू कि फिनिश योर वर्क, इसके बाद गेम्स पीरियड मिलेगा, so that sentence of mine is going to influence the rate of your reaction, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॉरवर्ड या बैकवर्ड बताइए, स्पीड बढ़ाएगा या कम कर देगा आपका? इफ ऐसे होके चलिए, इसके बाद गेम्स के लिए चलेंगे, To increase. स्पीड इंक्रीजेस, यस और नो? Yes, ma'am. एंड इफ ऐसे चलिए, ओके ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद 10 पेजेस और लिखेंगे, तो स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज और स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज? Obviously it is going to decrease. Who is interested? इतना पहले लिखने को दिया, अब 10 पेज और लिखने को कह रहे हैं, nobody is interested. So you will better feel कि अच्छा है, इससे अच्छा है पहले यही फिनिश मत करो, इसको ही धीरे धीरे लिखिए। So my sentence actually influenced your rate of work. Similarly, there is one factor बेटा जो rate of a reaction को बहुत ज्यादा influence करता है, that is temperature. Now there is a general observation which says that rate doubles or decreases by half for every 10 degrees Celsius change in either direction. If I increase the temperature by 10 degree, तो rate of a reaction double हो जाएगा। अगर मैं decrease कर देती हूँ temperature by 10 degree Celsius, तो rate of reaction क्या हो जाएगा, half हो जाएगा। Please remember this value, it is 10 degree Celsius. ठीक है? Supposing there is a reaction going on, and हम लोग क्या करते हैं, हम लोग medium का temperature 10 degree Celsius बढ़ा देते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन सपोजिंग 5 है, तो रेट अब कितना हो जाएगा, 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया बेटा मैंने, रेट इज Ma'am, 5. yes, what will be the new rate now after I increase the temperature by 10 degree Celsius? Tell me. ma'am, 10. 10. चलिए 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर, रेट हमारा ओरिजिनल 5 था, तो न्यू रेट क्या रह जाएगा बेटा, 2.5. Ma'am, 2 Yes. and a half.
Very good. चलिए one more example so that if you have not understood 1%, let's do it. Supposing we were doing an experiment in the lab and उस दिन temperature जो था बरेली में that was 35 degrees Celsius, a hot day. I increase the temperature. Medium हमने जहाँ पे reaction हो रहा था 45 कर दिया, उसको 10 and rate of reaction हमारा 10 चल रहा था बेटा. बताइए नया rate of reaction क्या हो जाएगा? Tell me. I've increased the temperature by 10 degrees Celsius. The original rate of reaction was 10. What will be the new rate? 20. Yes, very good. It's going to be 20. And if I decrease 35 to 25 पे लाके medium रख दिया, so जो original rate 10 था वो अब कितना रह जाएगा बेटा? 5. 5. 5. Very Five. good. Excellent. So let us understand कि enzymes कितना reaction की speed को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं. The rate of enzyme catalyzed reactions is very high. ठीक है? Rate normally is very high. Carbonic anhydrase is the fastest enzyme. This is again important from competition's point of view. The fastest enzyme is carbonic anhydrase. It accelerates the reaction 10 million times. Accelerates the reaction 10 million times का मतलब क्या हुआ? Explain it to me. ये बहुत ही powerful enzyme है. What is the name of the enzyme we've just discussed, children? बताओ. It starts from C. Carbonic anhydrase. Yes, this is Carbonic the anhydrase. fastest. Very good. Please learn it. बोल के याद करिए. It's the fastest enzyme discovered till date. It can increase the speed of a reaction. How many times? 10 million times. Okay. Now imagine कितना influence रहता है एक enzyme का. How many times बेटा? जल्दी बताइए. Carbonic anhydrase कितना times increase कर सकता है? 10 million times. 10 million times. इसका एक example समझते हैं. This is a simple reaction. It can take place in both directions. Carbon dioxide plus water giving you, what is this? H2CO3. जल्दी बताइए क्या है, किसका फॉर्मूला है? Carbonic Carbonic acid. acid. Very good. So अगर हम इसके बिना रिएक्शन करें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को हटा दीजिए यहाँ से. Imagine that this reaction is taking place without an enzyme. So you will get 200 molecules in 1 hour. In 1 hour, please remember the time also. पूरा 1 घंटा लगेगा आपका रिएक्शन चलेगा and you will get only 200 molecules. अब हमने सोचा चलिए एंजाइम यूज करते हैं. So we have used this fastest enzyme, carbonic anhydrase, and I'm not talking about an hour now. We are talking about per second now. See, 600,000 molecules are now produced per second. ये 1 hour था बेटा, जिसमें सिर्फ 200 molecules बन रहे थे 1 hour में. 3600 seconds. कितना seconds हो गया 1 hour में? 1 hour is how many seconds? Everybody knows this. Why don't you people speak out? I don't understand. 36. 1 hour is, हाँ. So इतने seconds में only 200 molecules. और यहाँ पे अगर enzyme ने काम कर दिया तो 600,000 per second. I hope you agree that this is a very fast, rather the fastest enzyme. Tell me very quickly which is the fastest enzyme? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. So hide करके पूछते हैं. If the direction is specified, तो rate of reaction को क्या बोलते हैं? Velocity. Velocity. Very good. Velocity बोलते हैं. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? डबल या हाफ? Double. 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 10 डिग्री, वेरी गुड. 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? Half. Half. Excellent, excellent. Very good. The fastest enzyme known as? Carbonic Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. It can accelerate, it can increase the speed of a reaction by how many times? 10 million million times. 10 million times. 10 million times. Without carbonic anhydrase, if I'm trying to do a reaction, combination reaction of CO2 and water to get carbonic acid, so 1 hour में how many molecules will I get? 200 molecules.
200 molecules. And then I said कि चलिए ये तो बहुत slow चल रहा है, let me use an enzyme. कौन सा enzyme use करें? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Okay, now we have used carbonic anhydrase. So 1 second में how many molecules we will get? 600,000. 600,000 molecules. 200 in 1 hour and 600,000 in 1 second. So you can see how the speed of a reaction is influenced by enzymes. ये है हमारा बेटा carbonic anhydrase. देखने में बहुत ही complicating है and actual में भी structure इसका बहुत ही complicating है. You don't have to go into details, but it's a very complicating structure. चलिए chemical reactions. In a metabolic pathway, each step is catalyzed by different enzymes. Just I'll give you 2 minutes. एक बार देखिए screen पे है क्या? Yes, beta, just observe it. Then I'm going to discuss with you what is happening over here. देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, but इतना मुश्किल है नहीं. See it nicely. We're going to discuss it very soon now. Seen? Should we start discussing? चलो बेटा, let's see. बहुत quickly. चलो बच्चे, let's start. What is this? In a metabolic pathway. What do you mean by metabolic pathway? What is a metabolic pathway? Where digestion common- takes place. What takes place, बच्चे? Digestion. Okay, she says where digestion takes place. Very good that you tried. Excellent. अच्छा बताओ बेटा metabolic pathways others also क्या होता है? कितना common word है? कब से पढ़ते आ रहे हैं? Metabolic pathway क्या होता है? देखो बेटा, not only digestion, digestion is one example of a metabolic pathway. Metabolic pathway को समझो कुछ नहीं होता है. बहुत सारे enzymes, बहुत सारे reactions को catalyze करते रहते हैं. And finally, one substance जो है वो एक final product में change हो जाता है. बीच में बहुत सारी चीजें बनती है. For example, you are making tea. सबसे पहले पानी रख दिया, हमारा इनिशियल सबस्ट्रेट हो गया. फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो टी है. आपने फिर उसमें क्या ऐड करा? शुगर ऐड कर दिया. अभी क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन. एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया. इट्स नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना. गैस चल रही है, गैस इन्फ्लुएंस कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन आपकी. फिर आपने थोड़ा सा उसमें टी लीव्स ऐड कर दिया, एक अलग कलर की एक और सॉल्यूशन आ गई है. फिर आपने मिल्क ऐड कर दिया, फिर बॉईल कर दिया. सो टी बनने तक बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बने. ओके, सो सच काइंड ऑफ अ रिएक्शन वेयर डायरेक्टली रिएक्टेंट जो है वो फाइनल आपको प्रोडक्ट नहीं दे देगा. बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड ईच स्टेप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एंजाइम. दीज काइंड ऑफ पाथवेज आर नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे. पाथवे क्या होता है? लंबा रास्ता. पाथवे इज व्हाट? अ लॉन्ग रूट. सो बीच बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते जाते हैं एंड आपको कनेक्टिंग लिंक्स रहते हैं. सो आप ऐसे समझो कि मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है. इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस. ईच रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कैटलिस्ट एंड देन आपका जो रिएक्टेंट था वो एक क्या बनाता है? फाइनल प्रोडक्ट बनाता है. ओके, इन अ मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स. फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस देखते हैं बेटा. ग्लाइकोलिसिस ये है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है. शायद 10th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत याद होगा. एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? टेल मी, one glucose molecule, how many pyruvic acids? 2. 2. Because if you remember class 10th में पढ़ा था that glucose is a 6 carbon compound and pyruvic acid is a how many carbon compound is it?
3. Pyruvic acid. Yes. Even if you don't remember, you can see over here. Pyruvic acid is a 3-carbon compound. Glucose is a 6-carbon compound. So obviously, एक glucose से how many pyruvic acids? 2. क्लास 10th में हमने पढ़ा था जब रेस्पिरेशन कर रहा था. Glucose converts to pyruvic acid. Pyruvic acid आगे क्या बनाएगा will depend upon the availability or absence of oxygen. अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था तो CO2 वाटर बन जा रहा था. एंड अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था तो प्लांट्स में क्या बन रहा था? टेल मी, 10th में पढ़ा है, जल्दी बताइए. एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड से क्या बनता है प्लांट्स में? Ma'am, ethanol and वेरी गुड. इथेनॉल एंड हाउ मेनी ATPs? वेरी नाइस. ma'am, 2 ATPs. एक्सीलेंट. एंड एनिमल्स में क्या बनता है बेटा? ma'am, 38 ATP molecules. 38 तो बेटा एरोबिक में बनेंगे. अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल गया एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया तो Ma'am, 38 lactic acid. एक्सीलेंट. लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एंड 2 ATPs. वेरी नाइस. सो द फेट ऑफ पायरुविक एसिड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अब तो हम लोग फिलहाल ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, वो तो आगे का पास है. ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? अ 6-carbon compound glucose breaks down into a 3-carbon compound pyruvate. This process is called glycolysis. बट बेटा ये डायरेक्ट नहीं हो जाता है. ये ग्लूकोज आप देख रहे हैं और ये है आपका पायरुवेट. तो ये डायरेक्ट तो चेंज हो नहीं रहा है. आप देखो बीच में कितने सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, कितने सारे रिएक्शंस हो रहे हैं. This entire pathway will be known as which pathway? Tell me, what is this pathway called? metabolic path. Metabolic pathway. Metabolic pathway. Very good. I hope you've understood what is a metabolic pathway now. कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं बनेगी यहाँ पे, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे. तो एक केमिकल रिएक्शन तो ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड हर रिएक्शन को एक अलग एंजाइम इन्फ्लुएंस करेगा. So such kind of reactions are metabolic pathways. सबसे अच्छा एग्जांपल यही है ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड. इनिशियल रिएक्टेंट ग्लूकोज था, फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बन रहा है बेटा. देखिए, ये देखिए, ग्लूकोज फर्स्ट चेंजेस इनटू ग्लूकोज 6 phosphate. The enzyme is hexokinase. Glucose 6 phosphate then changes into fructose phosphate. दूसरा एंजाइम काम करेगा. Fructose 6 phosphate now changes into fructose 1,6 biphosphate. Okay. So there are so many reactions, so many things over here. आपको ये याद नहीं करना है, आपको इसमें सिर्फ इतना याद करना है. Let me tell you that in a metabolic pathway, each step is catalyzed by different enzymes. And what is glycolysis? Breaking down of a 6-carbon compound into a 3-carbon compound, pyruvic acid glycolysis होता है. And ये याद रखना है कि how many enzymes take part in glycolysis? Tell me. It's on your screens. How many enzymes take part in? 10 different enzymes. Very good. So do you agree that this is a metabolic pathway? Yes, ma'am. Yes, beta, this is a metabolic pathway. If you see एक reaction ये हुआ होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 reactions हो रहे हैं. And every reaction is being catalyzed by a different enzyme. So that is why we had 10 different enzymes. You don't have to learn each of these byproduct, intermediate products. ना तो ये याद रखनी है, ना enzymes के नाम याद रखने हैं. This is not needed over here. Only remember glycolysis क्या होता है? Breaking down of a 6-carbon compound into a 3-carbon compound pyruvate is what we call as glycolysis. And how many enzymes are involved in this? Tell me, how many 10 enzymes are involved? 10. And bache, everybody is understood what is the metabolic pathway? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Only ma'am. one child has understood, no? Only Anadi. Just nobody has understood. Bolo beta, understood or not? Should I move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now it is better. अब अच्छा लग रहा है. बोला करिए. Nature of enzyme action, catalytic cycle. I just did a little bit with you. Enzymes act with a substrate like a lock and key model. देखो बेटा, different types of locks हैं ये देखिए. But
देयर आर सर्टेन स्टेप्स जिसमें ये होता है. सपोजिंग ये हमारा एंजाइम है, ये हमारा सबस्ट्रेट है. सो स्टेप्स में ये याद रखना है बस, E plus S, ES, EP, E plus E. That's all you need to remember. सबसे पहले क्या हो रहा है? This is your substrate, this is your enzyme. So substrate will bind to the enzyme. Okay, एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा. ये देखिए, ये एक्टिव साइट हो गई हमारी. ये खाली जगह है, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फिट हो जाएगा. सो सबस्ट्रेट एंड एंजाइम दे बाइंड टू ईच अदर. एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको हम बोलते हैं E plus S कॉम्प्लेक्स. व्हाट इज दिस कॉल्ड? E plus S complex. E plus S. ये बना E plus S कॉम्प्लेक्स. ES नाम दे दिया हमने क्योंकि ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, तो ये ES हो गए. कैसे ES हो गए बेटा? ये टाइटली बाउंड हो गया. बिल्कुल, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर. यहाँ पे ये अलग अलग थे, सो E plus S थे. अब ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो गया. ये देखोगे तो एक ही चीज लग रही है, दो चीजें नहीं दिख रही हैं अलग अलग. So this is your enzyme substrate complex. Now this active site, it breaks the chemical bonds of the substrate. अब क्या होगा? ये जो active site थी हमारी यहाँ पे, this will start breaking the chemical bonds of the substrate. अब ये substrate यहाँ आके fit हो गया, तो ये इसके bonds को break करना start कर देगा. ये जो active site, जहाँ पे ये active site है, यहाँ पे जैसे ये fit होगा, ये active site इसके bonds को क्या करेगा? Break करना start कर देगा. एंड बिकॉज बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा. सो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड. दैट इज व्हाई दे हैव चेंज्ड द कलर. नाउ वी डू नॉट हैव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वी हैव एन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. बिकॉज व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर मेड. सो न्यू बॉन्ड से नया प्रोडक्ट बना होगा. सो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? टेल मी व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स? Enzyme product complex. वेरी गुड. अब जो नया प्रोडक्ट बनना था वो तो बन गया, अब उसको रखने की जरूरत ही नहीं है. सो ये रिलीज हो जाएगा. जो एंजाइम है ये रिलीज कर देगा प्रोडक्ट्स को, एंड ये एंजाइम फिर फ्री हो गया ताकि दूसरा सबस्ट्रेट आए और फिर आके यहाँ पे अटैच हो जाए और फिर यही प्रोसेस चलता है. सो वन एंजाइम कैन एक्ट ऑन मेनी सबस्ट्रेट्स. एज सून एज ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बाहर निकाला, नाउ दिस एंजाइम का एक्टिव साइट अगेन फ्री हो गया so that another substrate can bind to it. This pathway goes through some unstable transition state structures. ये जो बीच में बन रहे हैं ये unstable transition state. Transition state means changing state. अभी final state नहीं आया, change हो रहा है. तो ये जो दोनों states हैं बेटा, इसे transition state बोलते हैं. ये वाला state और ये वाला state. So enzyme plus substrate मतलब ये अलग अलग थे. Totally bind हो गए तो ES complex बन गया. बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड्स बन गए तो प्रोडक्ट आ गया, तो ये EP कॉम्प्लेक्स हो गया. एंड जब नया प्रोडक्ट बन गया, सो दिस इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एंजाइम. सो अभी फिर सेपरेट हो गए. सो वी वांट टू कॉल इट एज E plus P. दिस इज नोन एज अ लॉक एंड की मॉडल एक्शन. व्हाट इज दिस मॉडल नोन एज? Lock me. and key model. action. चलिए लेट अस रिवाइज. एंजाइम में एक साइट होता है, ग्रूव लाइक साइट, खाली जगह जिसमें कोई चीज फिट हो सकती है. फ्रिक्शन याद रखिए हमेशा इसमें. यू रिमेम्बर फ्रिक्शन में क्या होता है? यही तो होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, इंटरलॉकिंग हो जाता है, यही सब तो पढ़ा होगा उसमें फ्रिक्शन में भी. तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही याद रखो. सो एंजाइम में एक खाली स्पेस है. व्हाट इज दैट साइट नोन एज? Active site. वेरी गुड, एक्टिव साइट. एक्टिव साइट में आपके क्या बाइंड करता है? Substrate. वेरी गुड, सबस्ट्रेट बाइंड करता है. सो इनिशियली वो पूरी तरह से टाइटली फिट नहीं हुआ तो हम उसको E plus S बोलेंगे, बिकॉज दोनों अभी मिलके एक नहीं बने हैं, दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर. सो वी कॉल देम एज E plus S. नाउ नेक्स्ट स्टेज, बिल्कुल टाइटली बॉन्ड हो गया वो. अब हम E plus S को अलग नहीं बोलेंगे. वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एन ES. ES व्हाट? Substrate complex. Yes, Substrate this is enzyme substrate complex. That is the ES complex. Very good. Now, because enzyme is acting on the substrate, तो bonds break होंगे, नए bonds बनेंगे. So कुछ नया product बनेगा. क्या बनेगा? Product. So we are going to get another intermediate stage. That is the EP complex. What is that complex called? EP complex. EP का मतलब? Enzyme Enzyme product complex. Complex. Very good.
अब मेन पर्पस तो एंजाइम का यही था बेटा कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना था, प्रोडक्ट बन गया, सो एंजाइम उसको अलग कर देगा, इट विल पुश ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि कौन सी साइड फिर से खाली हो जाए, Active site. Active site. एक्टिव, वेरी गुड। एक्टिव साइट में फिर आके दूसरा सबस्ट्रेट कंबाइन कर जाएगा, फिर वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करेगा। सो इफ वी स्टार्ट, आई विल स्पीक द फर्स्ट स्टेज, यू स्पीक द लेटेस्ट स्टेज, E+S, सेकंड इज ES. ES, वेरी गुड, थर्ड इज EP, EP. EP, excellent, and the last is E plus P. E plus P. हाँ, प्लस का मतलब दोनों अलग चीजें हैं। लाइक आई ऑलवेज गिव दैट एग्जांपल ऑफ टी, मिल्क एंड वाटर, मतलब चाय बनाने से पहले मिल्क एंड वाटर मतलब दोनों अलग हैं, लेकिन जब गैस पे चढ़ा दिया, दोनों को मिला दिया, तो आई विल से दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, सो आई विल से मिल्क वाटर। सो E+S followed by ES, ES. Yes. ES. followed by